जुट रहे हैं आज एमसीसी ग्राउंड में, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। 101,25,000 दर्शक भरे हुए हैं स्टेडियम में, यानी कि खचाखच भरा स्टेडियम। और यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारी टीम मौजूद है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए हैं निर्धारित 20 ओवर में। और बाकी जो कुछ इंट्रोडक्शन है वो साक्षी मंडवाल के हाथों। Shukriya Adeshi, and a good afternoon to all the listeners of All India Radio. The present story standing: India winning the toss, choosing to field first, putting Pakistan to bat, and Pakistan going on to make 159 in 20 overs for the loss of 8 wickets. 160 being the target for India to win. I'm joined in the studio by former India international cricketer Venkat Sundaram and senior sports journalist and expert G. Rajaraman. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Good afternoon. Venkat, आपके साथ शुरुआत करूंगी. 160 on board as target. Good score put up by the Pakistanis today, should we say? Yes, because they had a very shaky start. They lost their prime top order, Babar Azam and also Rizwan, before 20 runs were on the board. So after that, it was a bit of a struggle. But I think they fought well. Their other batsmen, Shan Masood and also Iftikhar, they batted particularly well because it was not an easy wicket to dominate the bowling. There was always something happening on the pitch, and Indian bowlers generally bowled well, I think, and they were trying too hard to get wickets. In the process, they gave away a few runs, but anything on 160 is always a good score in a 20-over game, and we are going to be in for an exciting finish. I think those people who are nervous should be very careful not to bite their nails because this is going to be a close match. It can be anybody's game. But I think the Indian batsmen should stay at the wicket. The people who have scored are those who have stayed at the wicket. No matter how difficult it is, if you get out to a good ball, fine. But otherwise, you have to stay at the wicket and wait for the right ball. राजा अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, 3-3 विकेट ली, लेकिन काफ़ी महंगे साबित हुए अक्षर पटेल। 1 ओवर में 21 रन होता है आदेश। हम 5 या 6 बॉलर जब खिला रहे हैं, हर एक के दिन एक समान नहीं होते हैं। और अक्षर पटेल का पेस शायद इफ्तिकार अहमद ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। 3 छक्के लगाए उन्होंने, और लगातार जब आपके शॉट्स पड़ते हैं तो खराब ही दिन निकलता है आपका। बट 160 चेजेबल स्कोर है। अगर एक टीम 159 बना सकती है तो दूसरी टीम 160 क्यों नहीं बना सकती है, जब आपके पास अच्छे बल्लेबाज हो। यू हैव गॉट गुड बैट्समैन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। आई थिंक 160 इज़ अ गेटेबल स्कोर। इंडियन टीम को भी ये मानना होगा। शायद 10 रन ज़्यादा हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि 140 भी मुश्किल होगा, बट दे फिनिश्ड विथ 159। क्रेडिट टू द पाकिस्तान बैटिंग। Okay, Venkat, once they get down to now, once the Indian team gets down now to bat first, exactly what do you think is the strategy that they'll be looking at? We need a good opening partnership, or we need a stable innings up to the first 5 wickets at least? See, cricket is a game of partnerships, whether you're bowling or you're batting. So if you get a good opening stand, even if it's a bit slow, if it's steady, that is important. Because if you lose wickets up front, why did Pakistan score 160? Because they lost only 2 wickets. In the first 10 overs, they had lost only 2 wickets. So then the batsmen came in and threw their bat and got away with it. So they had nothing to lose. Otherwise, they would have got about 135, 140. Now they've got 160 because they had wickets in hand. So if you got wickets in hand, you can take the chance and go for the shots. But I think it's important to have a good start. Maybe 30 runs in the first 5-6 overs for no loss would be a very good, because if their fast bowlers are good, you have to negate that. If you lose 3-4 wickets up front, this 160 will look like 320 or 220 or whatever. True. राजा, जो आकाशवाणी का ड्रेसिंग रूम है उसमें आप टिप्पणी कर रहे थे जब भारत बॉलिंग कर रहा था, तो आपका अनुमान था कि 4 बॉलर 16 ओवर डालेंगे, पेसर्स या फिर ऑलराउंडर, और स्पिनर्स शायद 4 ओवर ही डालें। तो ऐसे ही देखने को मिला, 3 ही ओवर ही किए। पिच स्पिनर्स के खिलाफ ही था, मैं ये बोलूँगा, और पेस बॉलर्स के फेवर में था। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने उछाल का प्रयोग किया पहले, और देखिए सब लोग शिकायत कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार 19वें और 20वें ओवर सही नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर में 22 रन दिए हैं।
व्हेन यू हैव गॉट बॉलर्स ऑफ दैट क्वालिटी अच्छी बात हो जाती है, बट एक आध ओवर खराब जाता है तो अक्षर पटेल से हुआ नहीं, बट अश्विन उसको कवर कर गए। और हार्दिक पांड्या को तारीफ करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 ओवर में रन दिए, लेकिन बाद में 3 विकेट छटका के और उन्होंने अर्शदीप ने वेंकट जिस तरह से अपना दमखम दिखाया, फैंटास्टिक। नहीं, वो देखिए कि वो युवा खिलाड़ी हैं, वो इतना बड़ा ग्राउंड में इतना लोगों को नज़र के सामने वो खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अक्ल से बॉलिंग करा, इंटेलिजेंट बॉलिंग, और वो ज़्यादा पेसी नहीं है, 128 130 मैक्सिमम होगा उनका स्पीड, लेकिन वो जिस तरह वेरी करते हैं लेंथ, शॉर्ट बॉल पे 2 विकेट देखे बाउंसर पे, बाकी बाउंसर्स को लग रहे थे शॉट्स, उसके बाउंसर पे लोग आउट हो रहे थे, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। तो आई थिंक ही इज गॉट ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बॉलर। स्पीड ही कैन ऑलवेज improve a little bit if required, but he is moving the ball both ways. वो अच्छा क्वालिटी है। But then do you think, Raja, that this somewhere puts a kind of a pause or silences down the fact that our death over bowling has now kind of not been that bad this time? Very quickly, very quickly. Too soon, just one game now, so too soon to pass any judgment on death over bowling. Today they bowled pretty well. They have done a good job. Arshdeep, unfortunately, in his last over went for a few runs. But other than that, I think India has no reason to complain about the bowling. Well, clearly we should have no reason to complain, with 160 being the target. Here's now all of us from the expert studio team over here from All India Radio saying goodbye. We'll now hand it over to our... Yes, we'll hand it over to a commentary team. Go ahead, enjoy the chase of the game. Free Hit 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वी के तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।